Hi guys, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to create the profile card using HTML and CSS. If I show you the demo of this content, so you can see that I have a demo page here, and on this demo page I have two cards with the same images but different names. And if I hover on this card, so you can see that the size of the card was increased and more details was visible. But the initial state more detail was hide. So you can see that. ठीक है, तो जो हमारा नाम है पहले हमको खाली नाम दिख रहा है और उसके बाद हमको ये फॉलो करने का है, ये सब बटन दिख रहे हैं दोनों, और यहाँ पर दोनों सेम है ये. ठीक है, तो यही होने वाला है हमारा आज का कंटेंट. एंड इफ आई शो यू एक्चुअल पेज ऑफ दिस कंटेंट, सो यू कैन सी दैट आई हैव सम content here because I write some HTML codes for saving some time, but don't worry about this, I explain you everything. So let's jump into the Visual Studio Code and let's start a video. So guys, now I'm in my Visual Studio Code, and if I show you, I have a one image, first one, and the HTML file and the CSS file. First let's talk about the HTML file. मैंने इसके अंदर पहले से ही CSS को ऐड कर दिया है. टाइटल के अंदर देख सकते हो प्रोफाइल कार्ड, and I have a big container here. Inside the container I store the inside this container I storing the two cards. First one is this and the second one is this. Okay, let's talk about the card container. I have a card container here. Inside the container I am adding an image, h1 tag is called name, and again I'm creating a one more div is called social, and inside this social जिसके अंदर मैंने सबके सब पोस्ट रखा है, फॉलोवर्स रखे हैं, फॉलोविंग्स रखे हैं, ये सब है हमारा. ओके, और यहाँ पर एक और डिव है मैसेज के अंदर, जिसके अंदर मैंने क्या हुआ है, एक एंकर टैग को रखा हुआ है. इनसाइड दिस एंकर टैग and inside the anchor tag I am adding a follow and the message button, and the second card was fully same like the first one. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हो. and let's jump in the CSS file. I am adding a font family here some, और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को डिफॉल्ट रिसेट कर दिया. एंकर टैग के अंदर मैंने क्या किया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, कलर्स को वाइट कर दिया, एंड आई एम एडिंग अ some height, width, and the display flags of the container, and using this display flags everything comes in the center of this page. And if I show you, so you can see that. ठीक है, जहाँ पर देख सकते हो हमारे पास सब कुछ सेंटर में आ रहा है. ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने CSS के अंदर, पूरा का पूरा इस पेज को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग हियर. सो नाउ आई एम गोना target the card container, this one, and close the sidebar. So now I'm target the cards here, cards. So inside the cards, first I am adding a background color is called white, adding some padding and margin, padding 1 rem and margin 1 rem, max, not a max, 1 rem from top and bottom and 2 rem from left and right. Okay, or add some border radius 30 pixel and add some flex properties using flex. यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने खाली फ्लेक्स लिखा और सब चीज़ें मेरे पास वापस आ गई, because I creating the snippets in the Visual Studio Code of the flex box. Okay, so I am adding a width here, width 300 pixel, and the height, no, my width is 500 pixel and height is 300 pixel. Okay, box shadow is 5 pixel, 20 pixel and gray. Okay, if I show you the output of this page, so you can see that everything comes in the center, and this image was overlap all the things, and this image was overlap all things. So first I'm gonna reduce the size of this image. So let's target the cards, and inside the card I have an image, and adding the width is 200 pixel, height 200 pixel. Okay, object fit cover, border radius 20 pixel. Okay, and add some margin here, margin 1 rem. Okay, if I show you the actual output,
come on. So you can see that everything goes in a row wise because I'm using the flexbox in the cards container. So I'm changing the direction of this cards. So change the direction is flex direction कॉलम, जिससे क्या होगा कि वो सबके सब एक के नीचे एक आ जाएंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर फ्लैक्स बॉक्स दे देंगे जिससे कि सब एक लाइन के अंदर आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमारा इफेक्ट है कुछ इस टाइप का दिखना बनना स्टार्ट हो चुका है। और सो नाउ आई एम गोना चेंज द लेआउट ऑफ दिस social container. So let's target the social container. So first let's target the social here, social, and inside the social I'm adding a flex, जिससे क्या होगा वो सब के सब एक रो में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब सब एक रो के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनके बीच का जो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करूँगा, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सो नाउ आई एम गोना सेलेक्ट दिस div like post, followers and the following, but now I'm not selecting using their IDs, I'm selecting using this method is called div। इससे क्या होगा, अरे यार, इससे क्या होगा कि सोशल के अंदर जितने भी div हैं मैंने उन सबको सिलेक्ट कर लिया। और नाउ आई एम एडिंग द मार्जिन हेयर, मार्जिन 2 rem, ओके, एंड फ्लेक्स बॉक्स एंड ऑल्सो एड द फ्लेक्स एक्शन कॉलम, जिससे कि क्या होगा कि सबके सब सेंटर में भी रहेंगे और एक के नीचे एक भी रहेंगे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर ये सबके सब जो है सेंटर में आ चुके हैं। ओके, पर ये आपको लग सकता है कि थोड़ा ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम इसको हाइड करने वाले हैं। ठीक है, जब भी कोई इसके ऊपर होवर करेगा तो हमारा इसका साइज बढ़ जाएगा। एंड द इनिशियल स्टेट दिस कंटेंट वाज हिडन। सो नाउ आई एम गोना क्रिएट द बटन हियर। सो लेट्स टारगेट दिस class is called MSG, and these class name is totally up to you, you can use any name what you want and what you like. So let's target this MSG here and add some margin here, margin I'm gonna add some different values in the whole side. So let's add the different okay, and let's target the MSGKA here I will target the anchor tag inside the MSG container like these both these anchor tag. So now I'm adding a background color and let's copy and paste it here and adding some padding 1 rem, font size 1.3 rem, margin 1 rem and 1.2 rem from left and right, and adding some border radius here is called 8 pixel. Okay, if I show you the button, so you can see that my button was designed, but here my message button was no background. So now I'm gonna remove the background of this message button, sorry. So let's target the message dot msg. Inside the msg I have a message class, message, and if I show you in the HTML, so you can see that I'm passing this class in the message container or message button। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ट्रांसपेरेंट, जिससे ही क्या होगा उसका जो कलर है वो हिडन हो जाएगा। एंड आई एम एडिंग अ कलर ब्लैक एंड बॉर्डर 2 पिक्सल solid gray, and if I show you, you can see that we got this image, we got this design here and ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ये आ चुका है। So now I'm gonna create this hover effect when we are hover on this container. The size of this container was increased. So now I'm gonna create this design. So let's create this design here. So if I hover on this card, so now I'm gonna hide the divs here. Div, जितने भी div हैं हमारे card के अंदर, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। These are the 2 divs inside the card container. So I'm targeting these divs using cards, and inside the card I have a 2 div. So now I'm gonna target these both divs here. So now I'm adding the opacity is 0 and the pointer event is none. Pointer event none. Okay, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि उनको सबको हाइड कर दिया। जो इसकी इनिशियल स्टेट होगी उसमें ये दोनों हाइड रहेंगे, एंड व्हेन वी आर होवर ऑन दिस कंटेनर सो द कंटेंट वाज विजिबल, एंड लेट्स गो विद एंड इफ आई होवर, so you can see that I'm change the value of opacity into 1 and change the value here is all,
and if I hover on this section, so you can see that my content was visible, but the size of this container was not increase. So now I'm going to increase the size here. So let's target the cards, and when we are hover on this card, so now I'm gonna increase the height of this container. So I'm adding the height is 550 pixel, and if I show you, you can see that here I'm adding only 300 pixel of height, and if I hover on this container, so you can see that the height was increased into 550 pixel. ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारी हाइट जो है बढ़नी स्टार्ट हो चुकी है, और ये कंटेंट भी हमको साथ साथ दिखने लग गया. बट एक काम हमारे पास अभी और रह गया. I'm gonna increase the size of this image when we are hover on this section. So I'm increase the size as well of this image. So let's image here, and I'm increase the size using transform property, transform scale 1.2. okay, you can see that the size of the image was increased, the container height was increased, and the content was visible. So now I'm adding the smoothness in this container. So let's target, and let's provide the transition here, transition 0.5 second all is. Okay, if I hover on this section, so you can see that my image was zoom. You can see that if I hover on this container, so the height of the container was increased smoothly, but my image was not. So now I'm adding a transition inside this image as well, so the image was also working fine, like a smooth. So that's the video, guys. I hope you like this video, and if you learned something new from this video, so please hit the like button and subscribe the channel, and I'll see you next time in the next video में. जब तक के लिए see you, bye bye.